Hi, good morning, everybody. I hope you all are doing good. Today's session has just begun, and this is 1 hour session, as most of you already know. And the session would closed around 10:30 today. During this 1 hour, you can ask your specific questions. I would be more than happy to answer those. And this is really going to be one of the best sessions I feel today. So looking forward to your questions, and I'm here at your service for next 1 hour. So till then, feel free to ask. The channel follows a very specific process here. In case if you want to get a free reading for astrological reading, then you must have the Lacuna Astro application installed. लकूना एस्ट्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना प्रोफाइल वहाँ क्रिएट कर सकते हैं. आपका प्रोफाइल बेसिकली आपकी कुंडली है, और जब आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पर एक लकूना टोकन दिया जाता है. और ये जो लकूना टोकन आपको दिया जाता है इज़ ए लाइफ लॉन्ग टोकन गिवन टू यू विच यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज फॉर योर बेनिफिट. आप लकूना एस्ट्रो के उस टोकन को जब मेरे साथ शेयर करते हैं तो आई कैन एक्सेस योर प्रोफाइल एट माई एंड, और फिर आपकी प्रोफाइल को यूज़ करके आई कैन जस्ट सिंपली डू अ रीडिंग फॉर यू. सो दैट्स द वे वी डू दिस. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसेस. कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप हमारा प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि हम लोग आपका प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते. कर तो सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं. ना करने की वजह सिर्फ यही है कि जब भी हम किसी की प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम आपको हे हाय सौरभ, हम उसमें आपको कुछ प्रेडिक्शंस देते हैं, उसमें कुछ आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाती हैं. लेट्स अज्यूम कि आपका प्रोफाइल मैंने बनाया, तो वो सारी रेमेडीज़, वो सारी प्रेडिक्शंस वो मेरे अकाउंट पे बैठी होंगी. आप ना उसे देख सकते हैं, ना उसको फॉलो कर सकते हैं. और लास्ट प्रॉब्लम इज़ दैट आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम. सो द सिंपल आस्क इज़ कि आप लोग प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद ही कंसल्ट करने का प्रयास करें. अगर आपने प्रोफाइल को नहीं क्रिएट किया है तो देन आई कांट हेल्प यू, एज सिंपल एज दैट. सौरभ, आई एम रियली गुड. हाउ आर यू डूइंग? How are you doing? Yeah, so what I explained is the way we do the readings here. आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल लकूना एस्ट्रो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है. साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लकूना एस्ट्रो ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ सूट ऑफ क्वेश्चंस. तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आप पूछ सकते हैं. एंड द पर्पज़ ऑफ दोज क्वेश्चंस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमारा इंटेंट ये है कि हम आपको अफोर्डेबल एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड करा सकें. सो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव क्रिएटेड दैट फीचर जहाँ पे जाकर के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अभी कल का एक इंसिडेंट हमारे पास आया जिसमें हमारे कस्टमर ने कॉइन्स परचेज़ किए, बट उनके कॉइन क्रेडिट नहीं हुए, तो दे केम बैक एंड सेड कि हमारे कॉइन्स क्रेडिट नहीं हुए हैं. एंड इट्स गुड दैट कि दे सेंट अ मैसेज टू अस.
तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स राइट, यू आर ऑन द मूव, आप कार में बैठे हुए हैं या आप अपने पार्किंग में हैं या आप अपने बेसमेंट में हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपका जो कॉइन्स हैं वो क्रेडिट ना हो। सो जब आपके कॉइन्स क्रेडिट नहीं होते हैं तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू राइट टू अस। एप्लीकेशन के अंदर आस्क क्वेश्चन का एक वो है, सेक्शन है, जहाँ जाकर के आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं एंड इवन द कंप्लेंट्स कैन ऑल्सो बी सेंट देयर। आप जब अपनी कंप्लेन वहाँ रेज करते हैं तो हम आपके अकाउंट को डबल कॉइन्स के साथ क्रेडिट करते हैं, प्रोवाइडेड आप हमें लिखें, प्रोवाइडेड आप जो वहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे वो अमाउंट हमें दिखना चाहिए हमारे अकाउंट्स में। एज लॉन्ग एज दैट इज़ देयर, rest assured you will get your tokens back. So Lacuna Astro is very committed और यहाँ इस सेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम आप लोगों को ये सर्विस फ्री अवेल करा सकें। ऑब्वियसली ये 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन नहीं हो सकता क्योंकि वी डू हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो एंड वी आर अ कंपनी, सो इट्स माई हॉबी एंड आई जस्ट वॉन्ट to offer something to the general public and that should be coming for free, so that's the intent we do it. Now coming back to the agenda of this session, so the main agenda of this session is to have a healthy discussion about your chart. so ये जो 1 घंटे का सेशन होता है इसमें हम मैक्सिमम 4 to 5 प्रोफाइल्स ही कवर करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोफाइल्स हम नहीं कवर करते हैं। तो अगर किसी को भी अपना कुछ भी एनालिसिस करवाना है तो उसके पास प्रोफाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस यू हैव योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएटेड इन लकूना एस्ट्रो एप्लीकेशन, you can ask your question and then definitely I'll look into that. So I'll wait for people to just create their profile if they are interested. Otherwise, I'll just focus on something I have been working on. अभी last week we released compatibility reports, right? So compatibility reports also available है अभी system में, तो आप लोग उसको जा कर के यूज़ कर सकते हैं. And that compatibility report is the most extensive report freely, I would not say freely available, but if you are a first time user then definitely for you it will be free.
तो आप जाइए, उसको यूज़ करिए। और बेसिकली जो मेथड उसमें यूज़ किया गया है मैच मेकिंग के लिए, मैच मेकिंग आप सब समझते होंगे, ये दो कपल्स की कंपेटिबिलिटी देखने का एक तरीका है। ऑब्वियसली ये जो तरीका है इज़ नॉट द ओनली वे और इज़ नॉट द ओनली थिंग वन शुड कंसिडर बिफोर कमिटिंग फॉर अ मैरिज। सो शादी के लिए कमिटमेंट का ये एक पार्ट हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग विच somebody is considering। तो जब भी आप मैच मेकिंग के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट इट गिव्स यू द प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन एंड यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस मैरिज इज़ गोइंग टू सस्टेन एटलीस्ट। तो वो सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, बट हाउ कंफर्टेबल यू वुड बी इन दैट रिलेशनशिप इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप उस रिलेशनशिप में कितने स्टेबल रहेंगे, आपका रिलेशनशिप कितना लंबा चलेगा, दैट ऑल इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी को हमने इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन वेरी सिंपल लेमन टर्म्स। तो आप उसको आराम से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आप और अपने पार्टनर दोनों की प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करिए, और प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें अपना स्पेसिफिक कंपेटिबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं। सो कंपेटिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हम आपको आपका परसेंटेज ऑफ कंपेटिबिलिटी बताते हैं, दैट इज़ वन थिंग। और ये बेसिकली जो रिपोर्ट है ये आपके अष्टकूट मिलान के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो एट द कैलकुलेशन लेवल हर चीज़ को एनालाइज किया गया है, दैट इंक्लूड्स योर आप किस वर्ण के हैं, आपका वश्य क्या है, आपका तारा क्या है, आपका भकूट नाड़ी, हर चीज़ को वहाँ पे एनालाइज किया जाता है। एंड आफ्टर द एनालिसिस वट एवर इज़ द स्कोर इज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू। और ये जो एनालिसिस है, जो एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्सेस। सो ऐसा नहीं है कि दैट इज़ रिटन जस्ट बिकॉज आई फील इट इज़ राइट। सो वहाँ जो कुछ भी आपको कंपेटिबिलिटी रिपोर्ट में देखने को मिलता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सट्रीमली एक्यूरेट। सो अराउंड 75+ लोगों के ऊपर ये बीटा टेस्ट किया गया है, जहाँ पे हमने 75 कपल्स को इन्वॉल्व किया है इस प्रोसेस में टू आइडेंटिफाई वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो आप में से अगर कोई भी चाहे तो उसको ट्राई करिए, यूज़ करिए। ये अवेलेबल है आपके ऑन योर फिंगर टिप्स। So you just need to have that application. That's it, and you get the access to the ultimate power. Now, moving on to the next point, right, where compatibility is not just one thing which we have introduced. We have also introduced mobile reports. So you can analyze your mobile number as well. Although a lot of people say that I respect them, but they say that कि मोबाइल नंबर का क्या है, उसको चेंज करने से क्या हो जाएगा। सो आई एम सेइंग दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर दैट यू आर द वन who has attracted that number. The number has not attracted you. So now the number is predominantly reflecting what you may be experiencing in your life. तो आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन उस नंबर से मिल सकता है. Now sometimes you may be unconscious about things which are going on, and when you read about it, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि yes, this is what I am experiencing. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब आप उसको यूज़ करें, when you use that mobile numerology का report, which is again available in the application, it is just one click away. रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, क्लिक करिए, जस्ट ऐड योर नंबर, यू गेट योर रिपोर्ट. रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी क्लासीफाइड है. सो द क्लासिफिकेशन हैपन्स एट योर प्रोफेशनल लेवल. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यू आर एन अकाउंटेंट और मे बी यू आर अ डॉक्टर, सो आपका जो भी प्रोफेशन है बेस्ड ऑन दैट आपकी रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है. दैट इज़ गुड फीचर आई बिलीव.
और वो जो एनालाइज्ड रिपोर्ट है, देयर आर सर्टेन सजेशंस ऑल्सो कि अगर आपके नंबर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि दीज आर दी मॉडिफिकेशंस यू शुड गेट डन इन योर मोबाइल नंबर. अब मॉडिफिकेशंस ऐसा तो है नहीं कि नंबर आपने एक उठाया दूसरा डाल दिया. दैट मीन्स द चेंज ऑफ नंबर. यू हैव टू गो फॉर अ चेंज, एंड दैट चेंज का जो पर्पज़ है, मेन इंटेंट ऑफ डूइंग दैट चेंज इज़ टू सबकॉन्शियसली मेक यू अवेयर. ऐसा नहीं है कि नंबर चेंज करने से ही आपका लोन उतर गया, या नंबर चेंज करने से आपकी हैबिट्स चेंज हो गई, या नंबर चेंज करने से यू स्टार्टेड लिविंग ए हेल्दी लाइफ. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो द इम्पैक्ट हैपन्स एट सबकॉन्शियस लेवल वेयर यू मे बी यूजिंग दैट स्पेसिफिक नंबर फॉर अ ईयर. 1 साल 2 साल 10 साल से आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, एंड दैट एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट इज़ वॉट यू सी इन योर लाइफ. अब उससे एक दिन में तो आप बाहर आएंगे नहीं. सो व्हेन यू चेंज दैट, देन योर माइंड कीप्स ऑन buzzing you, right, that you have to take care of yourself, or you have to stop impulsive buying and all that things, right? And that is what you would be experiencing. आप उसको on the basis of that you can definitely improve. I'm sure about it. So the purpose of that report is to just give you pointers that these are the things you should focus on, and based on that you are going to just work it out and see a considerable change in your life. तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जाइए उसमें अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट को ट्राई करिए, अपनी कंपेटिबिलिटी रिपोर्ट को ट्राई करिए. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई. अभी परसों का एक हमारे पास एनालिटिक्स में डेटा आया दैट गाय हैज़ ट्राइड 5 डिफरेंट नंबर्स. सो अपने घर में जितने लोग थे उन सब के नंबर्स को ही हैज़ ट्राइड, and after trying all the numbers he reached out to us on support saying that, sir, can I go with this specific number, although it has a few problem areas, but वो problem areas थे related to education and all that, and he is in 40s, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई इतना योगदान है नहीं, and the kind of work he does there is no involvement of mercury also, so we suggested him to go for it. So मेरा ये कहना है कि just go, give a try, see that report. If it resonates with what you are experiencing in your life, then definitely consider taking actions for it, and those actions needs to be taken at very deep down within you. So ऐसा नहीं है कि आप surface level पे कुछ change कर देंगे तो something would change within you. So the change within you happens when you do a considerable change which creates an impact on some subconscious mind, and that is the reasoning I'm saying when you change the number it starts working in a different direction. So ये 2 मेजर रिपोर्ट्स हैं जो भी अवेलेबल हैं आपको ऐप के अंदर at a very affordable price. If you want you can just purchase those for your friends and family, but अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो वो ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है. सो आप जाइए उसको यूज़ करिए, जनरेट करिए, देखिए आपके लिए उसमें क्या है, एंड लेट अस नो योर फीडबैक. आपके फीडबैक से ही हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. यू कैन सजेस्ट, यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन प्राइसिंग ऑल्सो. सो इफ़ यू आर नॉट ओके विद द प्राइसिंग then obviously let us know. We are more than happy to go ahead and change the pricing for you. So yeah, so I spoke about 2 things. One is आपकी अष्टकूट मिलान बेस्ड मैच मेकिंग जो आपके पास है, ऐप में अवेलेबल है, जाइए उसको यूज़ करिए. वी आर ऑल्सो गिविंग यू मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो भी ऐप में अवेलेबल है, जाइए यूज़ करिए. Apart from these 2 things, we have around 45 different questions also, and those 45 questions are based on different areas of your life. और जो areas of your life की मैं बात कर रहा हूँ ये actually आपकी कुंडली के 12 हाउसेस के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को क्लासीफाई किया गया है. So that includes
your education, that includes your health, that includes your marriage, that includes your job, includes your property, that includes your litigation possibilities. Everything is included there. आप जाइए उसमें अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं आप. अगर आपके क्वेश्चन के आंसर पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप आकर के यहाँ भी पूछ सकते हैं. व्हेन यू आस्क योर क्वेश्चन हेयर, यू हैव टू शेयर योर लकूना टोकन. और जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करके प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, टोकन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है. एज लॉन्ग एज यू हैव दैट टोकन अवेलेबल, you can just share it with me, and rest all is my responsibility. I'll just take care of it, and we can then just go ahead with that reading for you. So ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है just to get a little bit more about you. Obviously astrology has become so much accessible nowadays, so majority of you may already have some sense of astrology, but there are a lot of people who are claiming to make you aware of astrology within 2 hours or 4 hours webinar and things like that. First of all, that's a phishing attempt, so you all are going to be fished, that is for sure. Now during that phishing, in 2 hours nobody can learn astrology, I can guarantee that. तो अगर आप उसके थ्रू आ रहे हैं, या इफ़ यू आर लर्निंग थ्रू जस्ट बाय watching some YouTube videos, I would say that watching YouTube videos and learning from there is far better than joining these webinars, because these webinars are just simply gimmick. There is no actual backing behind it. हस्बैंड अहमद शेर दुबई से वापस आकर अच्छा फैसला लेंगे कि डिवोर्स का फैसला करेंगे. लाइक टू ए सी आसिया, it can't be answered like that. To get your answer, you have to have the Lacuna Astro application installed. ऐप को इंस्टॉल करिए एंड अपने टोकन को शेयर करिए. And once you share that token, I would be able to look into your profile. Token share करना is very important. Hey, hi Rishabh. What happened? What do you want to know? What is your question, Rishabh? We have our first token available to us, and this guy came yesterday also, and your question was related to job. What brings you back, Rishabh? Malti, you need to create your profile first, like Rishabh has done, right? So Rishabh ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है, एंड क्रिएट करने के बाद जो टोकन जनरेट हुआ है वो टोकन शेयर किया है. सो यू नीड टू हैव लकूना एस्ट्रो एप्लीकेशन, और लकूना एस्ट्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है. वंस द प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड, यू कैन शेयर योर टोकन विद मी, एंड आई वुड बी एबल टू लुक इन टू दैट. So please follow the instructions. That's the only way, Malti, you can get this reading. Marriage should be fine.
marriage should not be a problem. Even finances would also be okay. There can be only one problem, not problem. You may experience delay in your childbirth. So that's a possibility, that there can be a delay in your first child's birth after marriage. So that is something which you should just keep in mind. Your Mercury is not very well positioned, and I think this is the same thing we discussed yesterday also, and it is impacting multiple areas. So Mercury is Lord of your second house also, and it is involved in the seventh house as well, from the Drishti standpoint. And yeah, so you must make sure that your Mercury is functioning well. So I'll suggest you a couple of things for this. That is very important for you. Both the houses are. If you don't work on it, then definitely in your marriage you will be quite arrogant. Your communication would not go very clear, eventually creating a lot of confusion between you and your wife. So these are the things you may experience by default. So the advice is to just work on it. I'll suggest you a couple of things. You can just see if you can do it. Rishabh, it is updated now. You can just go and check that. So your remedies are updated. You can just go and give a try. Malti, I would request you to create your profile, and I see that you have disliked. That's okay. I want you to make sure that you are following the instructions, and we should stick to that. Now, numerologically, we don't go for predictions for marriage and all, right? So numerology is not good enough for those timelines predictions. Okay, if somebody is doing, let them do. You become happy, they become happy by suggesting you that. So that's their idea. That's absolutely fine. You can enjoy.
By the way, you have been already suggested what you need to do. Start doing that. That has an element of marriage also. uh, it will work on two things. It will work on your marriage possibilities, and it would also work on your ability to speak and speak clearly. So that communication faults you have right now, right, is also going to impact your marriage also. So my advice would be just go and do that, what is suggested. Along with that, if you can, you also need to have a 8-mukhi rudraksh. That is very important for you. Baki, it is your choice. The possibilities somewhere, if you are not married, the possibilities in 2026 September, where you can expect some progress there. 2026 September के आसपास you can experience some good रिश्ता coming to you. So आप उसको देख सकते हैं, ध्यान रखिए उस चीज़ पे. न्यूमरोलॉजिकली प्लीज़ प्रेडिक्शंस, बिहेवियरल प्रेडिक्शंस के लिए ठीक है, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द टाइमलाइन प्रेडिक्शंस एंड अदर थिंग्स, देन प्लीज़ डोंट काउंट ऑन इट. इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर श्योर. सो उस चीज़ का क्या फ़ायदा जिसके मिस ही बहुत ज़्यादा हों, राइट. सो लुक फॉर समथिंग जिसके हिट्स ज़्यादा हों. सो आपका शादी का जो योग है वो है 2026 सितंबर में. उससे पहले देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी. बात जो है आपकी वो शुरू हो जानी चाहिए समवेयर इन 2026 फैब, बट होगी सितंबर के आसपास ही. Sometimes a few people come here for validation, right? They are already married and then they come and ask कि कब होगी. So I would tell them that we are looking at your chart on the horizon of next 1 year. तो ऐसा नहीं है कि शादी का योग किसी की लाइफ में एक ही बार होता है. If it is already done, then you will be involved in something intense. So that is what you have, man. Baki, if it happens before that, then let me know. I have just taken the notes so that we know what I suggested you. Baki, if it happens before September 2026, let me know. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का तुम्हारे मैरिज से कोई संबंध नहीं है, बट मेक श्योर द लॉर्ड ऑफ योर सेकेंड हाउस इज स्टेबल. सो सितंबर 2026 से पहले कोई चांस नहीं है.
और आप प्लीज़ अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करिए. For that, a few remedies are suggested to you. Those are very, I mean, you can easily go for that. You deserve. इतना तो इन्वेस्ट अपने ऊपर कर ही सकते हो. So go for it. Do that. And once you start doing that, within 2 to 3 months time, you will be able to see the difference. But आप अपने शादी को और पैसे को एक साथ जोड़ करके मत देखो, ठीक है? They are not correlated in this specific case. Although the same planet is involved there in the finances and in the marriage, so that means it is going to impact both. इसका ये मतलब नहीं है कि शादी होने से पैसा मिलने लगेगा. So उसका correlation है नहीं, just to be very clear. तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए. बाकी एनीथिंग एल्स इफ़ यू हैव यू कैन आस्क. बट जो रेमेडीज़ बताई गई हैं वो इनएविटेबल हैं, वो आपको करनी ही करनी है. यू कांट जस्ट फाइंड ए स्किप आउट फॉर दैट. So we have 24 more minutes to go. I'll wait for somebody to create their profile and share. I see a lot of you are already creating your profiles, but you not asking question is really good. It means the app is serving the purpose. Let me see if there are being questions asked. Wow, 3 people have checked their compatibility. Wow. Good. Out of these 3, one user is an iPhone user. We don't know who that guy is, but we know that one iPhone user has done a compatibility test. This is good. Okay, guys, keep on creating your profiles. That's a good progress we are making. And as I said, I would be available for next 26 minutes with you. And meanwhile, if you have any questions, please feel free to ask. So at the beginning, I was talking about कि हम लोगों ने मैच मेकिंग लॉन्च किया है, जो कि अष्टकूट सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है. अष्टकूट में बेसिकली हम लोग 8 कूट होते हैं जिनको मिलाते हैं लड़के और लड़की दोनों की कुंडली के साथ. तो वो चीज़ पूरी इम्प्लीमेंटेड है. आप चाहिए उसको ट्राई करिए अपने लिए. और ये सिर्फ जो रिपोर्ट है सिर्फ अनमैरिड कपल्स के लिए नहीं है, मैरिड कपल्स भी उसको जा कर के ट्राई कर सकते हैं. सो I'll give you one classic example, right? One of the couples, they were trying for a baby and it's been a while. काफ़ी लंबे समय से वो लोग प्रयास कर रहे हैं. And they were not able to conceive naturally. And obviously the medical advice was to go for IVF. They came and they asked, what should we do? I asked them to go for the compatibility test report. Rather than they coming and getting analysis done, I requested them to go for that. And it clearly indicated there was a nadi dosh in their kundali, and obviously that leads to the experience they were having. So what I'm trying to make clarify here is that it at least gives you a clear enough indication, right? At least a direction is given. And then obviously there is good enough support available across medical domain where educated people are sitting there and they can help you. But at least you need to know, right, whether the direction you are going is right or wrong. And I also see that a lot of astrologers who were just bluffing and claiming हाँ हो जाएगा and ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, they all have started giving disclaimers, if you see, right? At the beginning of their ad, at the end of their ad, at the beginning of their videos, at the end of their videos, everywhere they are making sure their ass is saved.
because they have been using this to give a indication that कि हाँ जी आप ये कर दो सब हो जाएगा. But there is a very it's a very tricky thing, yeah. So astrology is not that straightforward. Whoever is coming, whoever is claiming, let them claim, doesn't matter. But यहाँ जो भी मुझे सुनता है, जिसने भी मुझे सुना होगा, they all must understand one thing, that कि it is not a silver bullet. It can just give you a pointer कि this is the direction you should look into. As long as you look into that direction and you maintain a certain intensity, things will happen. But if you think that somebody would tell you अच्छा things, तो सब अच्छा होने लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है. So that is not the purpose of astrology, and that is where a lot of people have abused it, right? And a lot of big names have abused it. So the main intent is कि कर्म करना तो आवश्यक है. You can't just run away from that. एस्ट्रोलॉजी उसमें क्या करती है कि वो बता सकती है आपको एक डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में आप अपना कर्म करिए और आपको इससे बेनिफिट्स मिलेंगे. दैट इज़ द मैक्स इट कैन डू. इट कैन डू एनीथिंग फॉर यू अदर देन दैट. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. I also shared one incident, right, where one of our regular viewer, we suggested her a specific remedy. She started doing it. The time frame which was given to her was for 3 months. So हमने बोला था कि 3 महीने आप इस पाठ को करिए and then you will get to see some changes. And in just 15 days she came back saying कि कुछ हो नहीं रहा मेरी लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा and all that, right? And then we asked, at least some positivity should be there, right? We asked, how are you chanting the mantra? So she shared a recording chanting the mantra, and we could see that it was very immature. It was pronounced absolutely wrong. गलत सलत तरीके से उसको बोला जा रहा था, पढ़ा जा रहा था. Then why do you think it would work? So the vibration, the frequency it creates is what really going to work on you. तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि whatever you are doing, no matter whether it's a mantra, whether it's you are doing a study, or maybe you are running a company, जो भी कर रहे हैं उसको fullest involvement के साथ करिए. If you're not involving in that, तो it is waste of time and you can't blame anybody else except you. तो आपको उस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझने की ज़रूरत है. सो रादर देन गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, राइट, I would talk about the application, and that's my intent here. So Lacuna Astro application जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. पहला चीज़ मिलता है आपको अपना एक डैशबोर्ड आपकी प्रोफाइल के लिए, और आप ऐप के अंदर एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. पूरी फैमिली का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, सबका जो भी हैं, मम्मी पापा वाइफ, आप अपना, अपने बच्चों का, जिसका भी मन गया आप क्रिएट करिए. वंस द प्रोफाइल्स आर क्रिएटेड, आप फिर जिसके भी प्रोफाइल को डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं, डैशबोर्ड उसके लिए कॉन्फ़िगर हो जाता है. अब आपका जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है. क्या क्या चीज़ें हैं वो? एक तो आप अपनी कुंडली देख सकते हैं. दूसरा, आप डैशबोर्ड से ही अपने क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं. आप अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. आप अपनी डेली, मंथली और ईयरली प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं. आप वहाँ से अपना पूरा न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख सकते हैं. आप अपनी लोशुग्रिड देख सकते हैं. आप अपना वास्तुशास्त्र का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके घर का सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है. सो दैट ऑल इज़ अवेलेबल इन द एप्लीकेशन ऑन जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स. तो आप उसको ट्राई करिए एंड let us know if you see anything which is useful for you. अगर नहीं है तब भी आप बताइए कि no, this is not making any sense.
लेकिन आपको फीडबैक देने से ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगा. सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक्स. वी आर क्वाइट कंस्ट्रक्टिव इन दैट एरिया. और जो भी लोग रिचार्ज कर रहे हैं, इन केस अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है और आपका कॉइन परचेज का सीक्वेंस फेल हो जाता है और आपका कॉइन परचेज पूरा नहीं होता है और आपके पैसे कट जाते हैं, तो आप हमारे सपोर्ट को लिख सकते हैं. लेट्स से आपने 50 कॉइन्स परचेज़ किए थे और आपका परचेज़ फेल हो गया और हमारे अकाउंट्स में वो पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको डबल कॉइन्स हम लोग रिटर्न करते हैं. वी डोंट से दैट कि इट इज़ योर फॉल्ट, ये वो ना, नो बुलशिट. वी सिंपली गिव यू डबल कॉइन्स टू यू बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम. आपने पहले तो परचेज़ किया, फिर परचेज सक्सेसफुल नहीं हुआ इन ड्यू टू सम रीजंस. देन यू केम एंड रोट टू अस. देन यू read that response which we gave to you. So in a way you are spending half an hour to 1 hour in that sequence. तो हम उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करें? सो उसको कॉम्प्लीमेंट या कंपनसेट करने के लिए वी सिंपली गिव यू डबल ऑफ द कॉइन्स विच यू हैव परचेस्ड. ओनली फॉर दोज पीपल जिनका परचेज फेल हुआ है. ये कैपेबिलिटी सबके लिए नहीं है कि आप कोई भी आएगा और सबको डबल कॉइन्स दिए जाएंगे. सो दैट इज़ नॉट द केस. देर आर अदर वेज ऑल्सो. आप ऐप के लिए फ़ीडबैक लिख सकते हैं. अगर फीडबैक आप अच्छा लिखते हैं तो हम आपको पहले 250 कॉइन्स देते थे, अब हमने उसको 500 कॉइन्स कर दिया है. तो आप ऐप के लिए फ़ीडबैक लिख सकते हैं और वो फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं. वी गो एंड चेक दैट फीडबैक. अगर वो फीडबैक हमें मिलता है ऐप में, देन यू आर नाउ सब्जेक्टेड टू गेट 500 कॉइन्स. 500 कॉइन्स का मतलब ये है कि आप 10 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे. सो वी आर कमिटेड. वी आर गिविंग यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी फील इज़ इन आवर पावर. तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ऐप को यूज़ करें, अपने क्वेश्चंस को पूछें. ऐप में कोई इशू हो तो वो हमें बताएं, सो दैट वी कैन करेक्ट दैट. एंड दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव. एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट, you will always find us standing beside you. That's the commitment from Lacuna Astro. We still have 15 minutes to go. इस नेक्स्ट 15 मिनट में अगर कोई अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ डू. आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी एज आई हैव कमिटेड. आई वुड टेक ओनली 2 more readings if somebody wants to go for it. Otherwise, we would be closing the session in next 15 minutes. Good morning, Vinayak. How are you doing? Why not? This 1 hour is for you, man. You ask as many questions as you want. So feel free to ask if you have anything. Anybody who wants to ask their questions must share their profile first. Profile token share करना ज़रूरी है. I see that right now 35 people are using the application. 35 people using the application right now. Wow. Let's see what they are asking.
No, Vinayak, you can't ask like that. You have to share the token. If this guy is somebody else, I think this is your profile only. You need to share your Lacuna token. Share your Lacuna token. You have it, right? You shared it yesterday. So you go in the application, copy it from there, and share it with me. So there is a very very no, not like I mean, yesterday you downloaded the application, you created your profile. Now the token is there. The token doesn't change. So go inside the application, copy that token, and share. I feel that you have deleted the application. So your question gives me a sense. So re-login in the application, your account would be restored. So you need not to create the profile again. So just re-login, get your token, and share it with me. We are also introducing one more capability now, where all the predictions I would have would be visible in the application. So here in the live session, I will just take your request. I'll not give any reading at all. So all the readings would be reflected in your mobile app, whatever is the prediction I have. So I would request everybody to make sure that they have the application. Obviously they can delete after asking the question. That is their choice. I think, Vinayak, we discussed the same thing yesterday, right? I told you that you are most likely going to be in the tech field only. That is given, but joining a premium college was a challenge, and for that there were some advices given to you. So if you can share your token, I can definitely look into that. Thank you. So token remains same. Token never changes. Once you create your profile, as long as you have not deleted your profile. So if you delete your profile, then the token would be gone. Then the token would be gone if you delete your profile. If you just keep your profile, then it will be there forever. So there was a remedy suggested to you yesterday, and I would suggest you to please seriously consider that. The possibility of you moving out can be definitely enhanced if you do that. But right now, the positioning, right, the Lord of the 12th house is really crying, saying मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. आपको to move, right, this is what you have to do.
It is updated now. You can go in the application and check the remedies section. No, that you can ask tomorrow. आज का हो गया कोटा. So आपके एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी है that I have updated. And बिना उस पे काम किए things are not very straightforward for you. So please consider. Okay. Perfect. Yeah. Okay, everybody. I think we are moving towards the closure of the session. I loved talking to you all. I could see that there were a couple of new faces here on the channel. I can also see that during the live session, around 35 people used the application. Out of those 35, only 4 decided to ask the question. Remaining 31 used the application and they asked several questions. There are 7 compatibility tests are being done. 7 लोगों ने compatibility test किया है अपने partner के साथ, which is really good. I loved it. I don't know your partner details unless you share your tokens, but it's good to see that you guys are trying the application and seeing the outcomes there. Before I close, I just wanted to let you guys know that we are working on yearly report. So 2026 की complete report आपके पास उपलब्ध होने वाली है, and that we are aiming to launch in first week of December. So that is when you would start seeing yearly reports in the application. Yearly reports में हम कर क्या रहे हैं? I want to clearly call that out. पहली बात तो हमारी yearly report जो है वो generic नहीं है, like others are doing. क्यों सारे लग्न में मेष लग्न के जितने लोग हैं सबको एक ही चिपका रहे हैं? No, that is not what we are doing. We are creating highly customized and personalized yearly reports जो individual के chart से aligned है, and that is what you are going to get. Also, I want to clearly call out one thing कि जो report हम आपको देने वाले हैं will cover all 12 months, yeah, starting from Jan to December. सारे 12 महीनों के बारे में आप वहाँ आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आखिरकार हम उसमें कवर क्या करने वाले हैं? सो हम वहाँ पे कोई भी बकवास नहीं कवर करेंगे कि सूर्य आपके इस राशि में चले गए, इनकी अवस्था ये हो गई तो अब आपके साथ ये हो जाएगा. ना 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 ना, वो तो जो होना है हो गई. हम लोग हम वहाँ वो ज्ञान नहीं देंगे. हम आपको ये ज्ञान देंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा ग्रह वीक है, किसकी दशा आ रही है, उस दशा के अंदर ये प्लानट किस तरीके से फंक्शन करेगा. ये फंक्शन जब कर रहा होगा तो आपके किन किन एरियाज़ ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा होगा और आपको क्या सावधानियां रखनी है. ये डिटेल में आपको हर महीने का एनालिसिस मिलेगा उस रिपोर्ट के अंदर, और ये रिपोर्ट आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में एक्सेसिबल हो जाएगी. दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन राइट नाउ. अभी आपके पास कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, मोबाइल नंबर एनालिसिस रिपोर्ट, ये 2 अवेलेबल हैं. लास्ट वीक तक मोबाइल नंबर एनालिसिस वाज ट्रेंडिंग. अब ये कंपैटिबिलिटी आने के बाद से सब लोग मैरिड, अनमैरिड कपल्स, एवरीबॉडी इज़ ऑन कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट. तो आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए कि ये कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट आपके किस काम की है एंड हाउ वेल इट इज़ एडजस्टिंग टू योर लाइफस्टाइल. देखिए उसको, बताइए हमें, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर बैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. With this message, I would like to close now, and I wish you all a good day, and
I'm sure you all would enjoy. And tomorrow, same time, around 9:30, we would be resuming the session. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए हमारे बारे में कि दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक कंपनी focused on astrology, and we genuinely want to help you. So आप यूज़ करिए इस कैपेबिलिटी को, यूज़ करिए इस 1 घंटे के समय को जो हम आपको देने के लिए आते हैं रोज़. And I can't extend it beyond 1 hour because we have other commitments also. We can't do everything for free, right? And we can't be available 24/7 here on YouTube, right? It's a good platform, nice platform, but we also have our commitments. So we'll resume the session tomorrow at 9:30. Till then, you guys take care of yourself, and definitely let us know if you have any feedbacks for us. Thank you, everyone. Have a good day. Bye.